we are going to discuss uniform continuity of certain functions. Indeed, we are going to discuss if f is continuous on a closed bounded interval, then I will show that f will be uniformly continuous. Uniformly continuity, ये हमने define किए, examples भी किए हैं. So it's time to discuss that theorem which states that if f is continuous on a closed bounded interval, then f is uniformly continuous. और इसको मैं साबित भी करूंगा. Proof of that statement. Let's see this one. If f is continuous on a closed and bounded interval AB, then f is uniformly continuous. So we have to find out, idea क्या है कि we have to show that f of x minus f of x bar less than epsilon. Whenever epsilon is greater than 0, I have to find out that x minus x bar is less than delta. And delta मेरा इस तरह का है कि this is true for all x and x bar belongs to AB जो मेरा domain है. ये मेरा target होगा. I have to show this one. So I will use, suppose that epsilon greater than 0, since f is continuous on AB, for each t belongs to AB, there is a positive number delta such that we have f of x minus f of t is less than epsilon by 2 if x minus t is less than 2 times of delta t. 2 times, it doesn't matter, आप delta t को redefine भी कर सकते हैं, delta t divided by 2 whenever x belongs to A. So this is just the definition of continuity. If it equals this one, it जो है वो ये आपका open interval बनेगा, इसका हमने ना, since this is true for all t belongs to AB, t belongs to AB, so we can define a set जैसे हम पहले करते हैं, it set of open intervals of this type for each t belongs to AB, which will cover the interval, closed interval AB. So this will be the open cover. अब open cover closed interval AB जैसे हम पहले argument देते रहे हैं, this is the compact set of real numbers. So it must have a finite subcover. So there must exist T1, T2, so on and so forth, and by applying the Hahn-Borel theorem, there must exist T1, T2, so on and so forth, Tn in the closed interval AB such that IT1, IT2, so on and so forth, ITN cover AB. इसका क्या मतलब है कि AB जो है वो इन सब का यूनियन मैं लूं, I equals 1 to n, ITN, ये सबसेट जो है होगा. इनफैक्ट इक्वालिटी आती है क्योंकि all these intervals IT1, IT2, so on and so forth, ITN are the subsets of AB. तो इनफैक्ट यहाँ पे इक्वालिटी आती है. So we define the delta minimum of all these deltas, delta T1, delta T2, so on and so forth, delta Tn, and I will show that x minus x prime mod less than delta and x prime belongs to AB are any 2 points from the closed interval AB, then this is true. F of x minus f of x prime mod less than epsilon, which is in fact the definition of the uniform continuity. And delta मेरा ये है, delta जो है वो मेरा ये है, which is minimum of all these delta. So I consider this one. I add and subtract f of tr. tr जो है वो इन्हीं में से कोई एक, जो deltas it intervals IT1, IT2, so on and so forth, जो intervals मेरे पास finite open cover जो है, by applying the Hahn-Borel theorem जो है, वो उनमें से कोई एक TR है. Triangular inequality मैं यूज करूंगा, less than equals to, क्योंकि absolute value मैं split कर रहा हूं. Then, since IT1, IT2, so on and so forth, all cover AB, जो कि cover मैंने बताया आपको कि क्या मतलब है, union of all these sets, AB will be the subset of union of all these sets. X must be in one of these intervals. X belongs to AB है ना,
तो ए बी जो है इनकी यूनियन है 1 to n i t i का। तो x जो है वो इन ओपन इंटरवल्स फाइनाइट जो सब कवर हमने फाइंड आउट किया, x must belongs to some ITR. So x minus TR must less than delta TR. From the continuity condition हमारे पास f of x minus f of TR जो है वो epsilon by 2 के इक्वल होगा whenever with t equals TR. From 2 and 4 continuity condition and 4 the triangular inequality जो है वो हम यहाँ पे x bar minus TR equals x को मैं add और subtract कर रहा हूँ, इसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज कर रहा हूं, दैट विल बी लेस देन डेल्टा, और डेल्टा जो है मैंने डिफाइन किया हुआ है मिनिमम ऑफ ऑल दीज डेल्टास प्लस डेल्टा टी आर। डेल्टा जो है ये मिनिमम है किसका, मिनिमम ऑफ डेल्टा टी वन, डेल्टा टी टू, सॉन डेल्टा टी एन। डेल्टा टी आर भी तो इन्हीं में से ही है ना, तो डेल्टा टी आर जो है ज्यादा से ज्यादा मिनिमम हो सकता है, या अगर मैं इसको डेल्टा को रिप्लेस कर दूं इन्हीं में से कोई एक वैल्यू से तो इनइक्वालिटी और लार्जर होगी। सो आई विल रिप्लेस दिस वन 2 times डेल्टा टी आर मैंने लिख दिया। देयरफॉर फ्रॉम कंटिन्यूटी कंडीशन विद t equals tr and x replaced by x prime implies that f of x prime minus f of tr is less than epsilon by 2 whenever we have this one x prime minus tr less than 2 times डेल्टा टी आर। सिंस ये टी आर जो है आर्बिट्ररी मेरा कोई भी फाइनाइट इंटरवल में से था, और हर इस इंटरवल में से ए बी इंटरवल जो है वो सबसेट है इनकी यूनियन का, सो आई कैन रिप्लेस टी आर विद एक्स विच इज द रिक्वायर्ड। दिस 3 and 5 implies that f of x minus f of x prime mod less than epsilon, जो कि मेरी कंटिन्यूटी की कंडीशन थी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की कंडीशन के लिए मैंने यही टारगेट सेट किया था। सो वी हैव प्रूव दैट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर एक फंक्शन f जो है कंटिन्यूअस हो ऑन क्लोज्ड इंटरवल हो और बाउंडेड इंटरवल हो, देन इट विल बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन जो है ये होगा।